वी शैल हैव रीच्ड द बेस कैंप बाय द इवनिंग टुमारो, यानी कल शाम तक हम अपने बेस कैंप पहुंच चुके होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीन प्लस present participle of main verb. This tense is used for actions that begin in the past and are continuing at the time of speaking. यानी इस टेंस का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए होता है जो पीछे शुरू हुई और वाक्य बोलते समय भी जारी हैं। The Eskimos have been living in subpolar conditions for ages. That street light has been glowing since the morning, but it will go off as soon as it is dark. एक और वाक्य देखिए। I am studying in Delhi University since last June. The use of the present continuous studying and the preposition since make it clear that this sentence is an example of the present perfect continuous tense. Therefore, in place of am, it should be have been. The correct sentence will be, I have been studying in Delhi University since last June. An important point is that in a negative sentence, not is placed just before been. यानी किसी नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव नॉट का स्थान बीन के ठीक पहले होता है। You have been not writing a letter. Incorrect. You have not been writing a letter. Correct. And we can also make interrogative sentences employing a present perfect continuous verb. यानी present perfect continuous verb लगाकर हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे Have been you eating? Incorrect. Have you been eating? Correct. Is burning Paris? Asked Hitler. Incorrect. Is Paris burning? Asked Hitler. Will be you coming to the office tomorrow? Incorrect. Will you be coming to office tomorrow? Correct. Past perfect continuous tense. Subject plus auxiliary verb plus been plus present participle of main verb. When we convert from direct speech to indirect speech, the past continuous verb changes to past perfect continuous. यानी जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस उदाहरण में देखिए, डायरेक्ट स्पीच, द कैप्टन सेड, I was looking for a solution day and night, but did not find it. Indirect speech, the captain said that he had been looking for a solution day and night, but had not found it. आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब was looking इनडायरेक्ट स्पीच के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब had been looking में बदल गया है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस will or shall plus auxiliary verb plus been plus present participle of main verb. I or we shall have been sleeping. You, he, she, it, they will have been sleeping. This tense is used for actions in progress at a point of time in the future. यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायता से उन क्रियाओं को दर्शाते हैं जो भविष्य में किसी समय चलती हुई होंगी। When we meet in Delhi July next, I shall have been living there for nearly 5 months. यानी जब हम अगली जुलाई दिल्ली में मिलेंगे, मैं वहां लगभग 5 महीनों से रहता हुआ होऊंगा। इस वाक्य के अंतिम हिस्से से स्पष्ट है कि हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को व्यक्त करना आसान नहीं।